somebody very special, somebody we all love very, very much. Azfar Rehman. How are you, Jani? I'm good, Begum Sahib. How are you? Very well. मुझे अभी याद है आज से 20 साल पहले जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी तो तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे. अच्छा, आपने कहा कि good boys and bad boys, but they are very bad boys too. Yes. Yeah. Are you trying to throw a hint? Well, possibly, maybe. Possibly, I know, Jani. But tell me, how do you keep yourself looking so young and vivacious? Looking so young से तो मुझे agreement नहीं है. इस वजह से because I am young. So looking so young, if somebody is young, will look young. So I think I'm young and I feel one should stay young forever. And I think that's the way it should be. And vivacious तो आपको पता है कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है तो you know it's Begum Sahiba, your goodness, it's just a reflection. And I have to say this, and I have followed your journey for the last 20 years. You have worked very, very hard. Extremely hard in terms of even personality development, and then camouflaging my real self into somebody more acceptable in the industry and otherwise in society also. So I think it's been a crazy journey, and I believe that one day, Begum Sahib, I'm going to write a book on myself, or maybe narrate my story to some director to make a film on it, because I think it's a story of a very simple boy with big dreams trying to make it big and going through different paths, and life is full of turns, and aaj ke time ki baat karu, life is full of U-turns also. There are a lot of U-turns. So all of that, but it's been a crazy journey. Azfar Rehman, if I were to ask you कि अपने journey को summarize करो, तो how would you do that? Adventurous, just one word. Adventurous, like a roller coaster, as they say. It is, कहते कि there are sunny days and there are rainy days and there are really dark days. But I believe that Allah Miya has been very kind to me and the journey has been very smooth. लेकिन मैं आपको तो बेगम साहब इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है अपने अंदर एक फेथ रखने से और एक गुडनेस रखने से. आई फील कि मैंने हमेशा सारी जिंदगी घोड़े की तरह गुजारी है, आगे देख के भागता रहा, एंड आई एम स्टिल रनिंग, एंड गुड थिंग्स हैपन टू यू, नेवर टेक थिंग्स टू सीरियसली. मुझे लगता है जिंदगी में चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए. You should take it as they come to you, otherwise life is great. Yes, absolutely, and I love horses. I know. हाँ, तुम्हें घुड़सवारी का शौक है? Kind of. It depends on my mood. कैसे घोड़े मिले? घोड़े अच्छे लंबी रेस के बस नहीं मिले, बाकी काफी सही थे. तो तुम खुद लंबी रेस के घोड़े हो. हाँ. और अभी तो रेस शुरू हुई है. बिल्कुल. But there is, I'm asking you, is there a race? Do you consider yourself running in a race, or who are you racing against? It may sound very cliched, but the race is with you only. You want to keep doing better and bigger things in life. And honestly, मैं एक बात तो बेगम साहब, अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो and happy go lucky हो, I think good things come your way by itself. मैंने देखा इतने सारे लोग हैं. एक मैंने बड़ी अच्छी तस्वीर देखी थी, I really want to share this here. मैंने एक पिक्चर देखी कि 3 बच्चे हैं और उन्होंने कोई रेस कॉम्पिटिशन जीता है. एक नंबर 1 पे, एक नंबर 2 पे और एक नंबर 3 पे. नंबर 1 वाला नंबर 1 की शील्ड पकड़ के यूं खड़ा हुआ है. नंबर 3 वाला is so static के I'm नंबर 3 and so happy. और जो नंबर 2 वाला है उसने बलून्स पकड़े हुए, वो कुछ सोच रहा है. So happiness has nothing to do with your position, or it has nothing to do with where you're standing professionally, or like that. I think you should be enjoying all that you've been given, and I think life is great like that. But darling, call me naive or whatever, but I think happiness has a lot to do with your position. Indeed. What is your favorite position, darling? My favorite position, missionary. I don't believe you're having this conversation. Well, I have had enough of missionary position. I want to try something new, something different. Try dictionary, because there are a lot of other positions there in the dictionary. Absolutely, darling. इस दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, visionaries and of course missionaries. Do you consider yourself more of a visionary or a missionary? It's great to have both. Best of both the worlds. Both the worlds. Absolutely. Do you discriminate? I don't discriminate. Everybody has a right to live, laugh, and enjoy life. Absolutely. Yeah, because God has created everybody, and God cannot make mistake, and He's created everybody perfect. And I believe we should realize that and accept the way people are, and just have a good time in life. There should be tolerance, acceptance for everything and everybody.
I seriously believe in that. Azfar, every time I look at you, I think that you are cut out for big things in life. मुझे लगता है कि तुम्हें भी शौक है बड़ी चीजें करने का. Of course. To be in big places. Absolutely. Really. लेकिन somehow I've only seen you act in one film. पंजाब. मैं पंजाब नहीं जाऊंगी. पंजाब नहीं जाऊंगी. Yeah. पहले तो मुझे ये बताओ, how was that experience? It was fantastic. It was like working with my best friend Mehvish. Then the director Nadeem Beg, happens to be such a huge pillar in my life. And then working for the first time with Humayun Saeed is huge. It's like such a big opportunity. Nobody would want to let it go. But Begum Sahaba, very honestly, I'll tell you something. I have never tried, or I have never, ran around production houses or convinced directors. I believe whenever a director will see potential, because my work is out there. If they see a potential and if they want to bank on me, they'll come. It will come my way if it has to. But in the past, or if you look across the border, बड़े-बड़े stars के जो औलादे हैं, बड़े-बड़े directors की जो बच्चे हैं, they couldn't make it big. So I think if it's destined to happen, it will happen. But life is great otherwise. Offers तो बहुत आई होंगी. हाँ. जिंदगी में. Yeah. फिल्म के बाद या फिल्म से पहले? फिल्म से पहले बहुत ऑफर्स थी. मैं आपको सच बताता हूँ. काफ़ी तरीके की फिल्मों की ऑफर भी थी और इनफैक्ट अभी भी आती है, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं एक सर्टन टाइप की फिल्म में काम करूंगा. देखिए, कोई भी चीज़ पहली दफ़ा करनी चाहिए तो वो बहुत शानदार हो, और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब नहीं जाऊंगी इज सच ए ग्रेट किक स्टार्ट, क्योंकि वैसे जो मूवीज़ ऑफर हो रही थी या तो वो उन डायरेक्टर्स की पहली फिल्में थी या फिर जो स्टोरी थी. पंजाब नहीं जाऊंगी was such a risk-less deal for me. It was banking on the biggest superstar of the country. You have the biggest female star starring in it. So मेरे लिए it was a safe sailing. मैंने कहा इससे अच्छा start हो नहीं सकता. That you show yourself, you have a song also, and you are in full glam and everything. You trust the director. तो इस तरह से चीज़ हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि good things will happen to good people. Do you like challenges, Azfar? Absolutely, I do. Do you consider that life has been challenging for you? Absolutely, it has been. Begum Sahaba, even on the personal front, see, my family is full of chartered accountants, 4 brothers, all chartered accountants, and I'm the black sheep. I did advertising. I had no inclination towards accounts or books or numbers, all of that. So, turning into an actor and doing all of this, ये सब मुझे ऐसा लग रहा था कि it's a challenge. इसमें आना फिर, constantly family eye on you, whether you will be successful or not. Even till now, they would tell me कि तुम उस position पे तो नहीं पहुंचे, तुम ये तो नहीं बन गए, but still, I've come a long way in my eyes. I think, I've done a lot for myself. लेकिन ये होता है, दूसरी चीज़ है challenge. पिछले कोई 3 साल से, मैं आपको बड़ा सच बात बताता हूँ, I was never serious about work. मुझे ऐसा लगता था कि I'm sheer lucky and it will come my way. I was overconfident. लेकिन पिछले 3-4 सालों में मैंने जो scripts choose की, मैंने जो ड्रामे करना शुरू किए, मैंने कैरेक्टर एक्टिंग शुरू की, हर ड्रामे में लंदन अमेरिका रिटर्न मिल रहा होता था, उसको तोड़ा, गरीब रोल्स किए, जादूगर का रोल किया, सराइकी नौकर का रोल किया, and people realize that I can act. I got several nominations and all. So इस तरह it has been challenging, or I think you should be challenging yourself in everything. Absolutely, darling, and I can't help but admire your beautiful mouth. It looks so delicious. Have you been told how beautiful your lips are? Very often. Tell me something new now. No, I'm asking you. When did you realize that... my mouth is beautiful. Yes. When did you realize the true potential of this? Of my mouth? I realized when I did my first talk show. It was called Entertainment Tonight, and I never knew I could talk so much. उससे पहले I like talking to people. मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, बात करना. About life before marriage and life after marriage. We see a lot of people in this country who get married, but they stick to their old habits. And they say old habits die hard. Yeah. Was it difficult for you to give up your old habits? Begum Sahaba, I'll tell you one thing very honestly. Anything should not be taking over you. Bad habits are a part of your life. Even if you smoke or you drink or you party a lot, it's a part of your life. Your life is not a part of bad habits. So, nothing in life should be controlling you. Rather, I think you should be in a position to, toss it around and, control it. So, शादी के बाद, I think life has become much, much better. Much better. So, you like to be in control, I guess. I gather that much. I like to be in control. In control of your life. Of myself, and people around you as well. Absolutely. Because I've realized, I learned it the hard way. There was a time 7-8 years ago, I was completely out of the industry. I wasn't getting any offers, no work.
because I was totally out of control. Then I realized that, you have a position, even if it's like much below, much lower in the rat race, but you need to come up, and to come up, you need to, up your game and, focus and be in control and be a certain way so that, people find you believable. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी थोड़ा कुछ, तो and I think staying in control is the best thing. हर चीज़ थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है. मैं तो बेगम साहिबा सबको ये कहता हूँ कि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा हो ना, वो सबसे कम करनी चाहिए ताकि उसका मज़ा बरकरार रहे. जानी, मुझे तो जिस भी चीज़ में मज़ा आता है मैं तो वो सबसे ज़्यादा करती हूँ. How does one practice this kind of self-restraint? कैसे इंसान अपने ऊपर अपने आप को. आई थिंक ये कंट्रोल इज अमेजिंग. आ जाता है वक्त के साथ साथ. आई थिंक ये आता है कंट्रोल वक्त के साथ साथ, और आई थिंक मैच्योरिटी वक्त के साथ साथ आती है. हम लोग डिनाइल में रहते हैं, हम लोग अपने आप को 16-17 का समझते रहते हैं सारी जिंदगी. यू हैव टू स्टे यंग बट नॉट चाइल्डिश. यू हैव टू स्टे लाइक अ यंग अडल्ट बट नॉट चाइल्ड. अच्छा असफर, ना लोग कहते हैं ना, I'm sure it may be true to some extent कि शो बिजनेस एक बहुत ही एक ऐसी फील्ड है where you come across a lot of artificiality, a lot of fakeness, a lot of दिखावा, things that might not be true are passed on as reality. लोग असली नहीं होते, नकली होते हैं. इमोशंस असली नहीं होते, नकली होते हैं. How far do you think that is true? देखिए, भी तो बिल्कुल सच है, और मेरे ख्याल से इस चीज़ को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए. आपके पास एक आपका सेट ऑफ फ्रेंड्स है जिस पे आप बैंक करते हैं इमोशनली. आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास एक कोई लवर है या बीवी है या शौहर है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है जिसके पास आप इमोशनली सिक्योर हैं. बाकी सबको एंजॉय करें. कोई फेक है उसको रहने दें, एंजॉय करें उसकी फेकनेस को भी. क्या है, हमने कौन सा जज बन के मार्क्स लोगों को दिए. But people are like that. आपको पता है किस वजह वो अपनी महरूमी छुपाते हैं. अपनी महरूमी छुपाने के लिए दूसरे पे तनकीद शुरू कर दो. ये सबसे आसान तरीका होता है. अगर आपके अंदर कोई झोल है या फ्लॉ है या कुछ है, उसको छुपाने के लिए उस पे बात ना आए, दूसरे का फ्लॉ डिस्कस करना शुरू कर दो, तो आपका फ्लॉ उन लोगों को लगता है कि कवर हो जाता है, बट नहीं. आई थिंक टॉलरेंस होनी चाहिए. और ये जितने भी फेक लोग हैं, देयर आर सो मेनी आर्टिफिशियल पीपल आई कम अक्रॉस. And I would like to admit on the screen here that there are times when I am also very artificial and fake, because I think it's a norm. There are certain parties, or you go to a certain place where you actually don't feel like being, but you have to. It's a part of your job, right? तो कुछ artificial मैं भी होता हूँ जगह जगह, ऐसा होता है. Who are all the people who've contributed in your life? मुझे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा मेज़बान हूँ, होस्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ. तो मुझे होस्टिंग सिखाई उज़मा नदीम साहिबा ने, जो कि उसमें एक चैनल था, अभी भी आज टीवी, जिसके बाद मेरा पहला टॉक शो था. शी एक्चुअली टॉट मी हाउ टू सेट, व्हाट पोस्चर, हाउ टू टॉक, अपनी आवाज़ ऊपर नीचे मॉड्यूलेट किस तरह करो, अगर कोई एज से बड़ा गेस्ट है तो कैसे बोला, ऑल ऑफ दैट. तो शी इज़ द पिलर बिहाइंड व्हाट आई होस्ट टुडे. उसके अलावा इफ़ यू कम टू ड्रामा, आई वुड लाइक टू टेक फ़हीम बर्नीज़ ने. even when nobody was believing in me, जब लोगों को लगता था कि आई एम अ बैड बेट और पैसा डूब जाएगा, ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा, again and again he banked on me. He had full faith even till now. All his best scripts, I'm the hero. Even I don't consider myself to be a very bankable star. लेकिन हमेशा से उनको ऐसा लगा कि मेरे में पोटेंशियल है या कुछ है. एंड आई completely owe major portion of my drama life and whatever actor that I am to Mr. Fahim Barni. He has done so much for me कि मैं अब बता नहीं सकता हूँ. Hats off to sir. I salute you. And welcome to films. Coming to films, my first stunt films is Punjab Nahi Jaungi. I think it was 2:30 at night when Humayun bhai and Nadeem called me. It's like, are you free in these dates? I swear, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ड्रामे की बात कर रहे होंगे मे बी. It's like, एक मूवी में काम करोगे तुम. मैंने कहा of course, what? मैंने कहा क्या रोल है? Are you serious? You actually want me to do this? But is it a prank? Am I on some candid camera call? मैंने कहा no, this is going to be like that. तुम चाहो तो महविश से पूछ लो. मैंने फिर महविश को फ़ोन किया. महविश का करो इतना मज़ा आएगा. फिर that's how it happened. And even till today, Punjab Nahi Jaungi is like, the most colorful feather in my hat. Absolutely, darling. But I believe, and I've heard from a lot of people कि ये बहुत exploitative industry है. Did you feel any kind of exploitation? Exploitation in what terms? Exploit in the sense that you use people to your advantage, to your gain. Like a casting couch. And yes, of course, coming to the casting couch. I think that's the most colorful part of this question. But I tell you, what? I think it's each to his own. कहते हैं different strokes for different folks. और मुझे ऐसा लगता है कि if there are times when people give in,
there are times when people in my position initiate also कि you can take an advantage and give me something in return. तो I think कि ये चीज़ें सदा से चलती रहेंगी. गलत है, एंडोर्स मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, गलत है, मगर ये है, चलता है. जहाँ तक मेरी बात है, ऑफकोर्स जब मैं आया था there were a lot of offers कि तुम ये कर सकते हो, तो if you can do this for me, I can do that for you. तो ये सारी चीज़ें थी या नहीं थी, वो मैं उसमें कितना मेरी इंडल्जेंस थी या कितनी नहीं थी. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अभी इतने फॉलोअर्स हैं और अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ तो मैं उनको एंडोर्स कर रहा हूँ. तो मेरे ख्याल से saying yes to anything that's illegal or wrong is wrong, and I would never initiate or endorse anything that's negative. Are you a giver or a taker, Azfar Rehman? See, it depends on the deal. What the deal is. I mean, what side of the fence have you normally found yourself to be? Where the money was buried. That side. But I don't think your kick was ever the money, really, was it? It was work. And you wanted something. I think you were very passionate about proving yourself. Absolutely. And you are living your dream right now. Alhamdulillah. जानी, आजकल harassment के बहुत चर्चे हैं. And as we all know, Me Too campaign बहुत जोर पकड़ रहा है. Somehow naming and shaming has become the order of the day. What do you think about? What is your take on the Me Too campaign? It's a very sensitive subject, Begum, and I think nobody should be harassed. Everybody has a right to live the way they want to live. A. B being, you can never force yourself on anybody. That's wrong. If it's mutual consent, if two people like each other and if there's an understanding, and even if there's an understanding of give and take, there should be an understanding. You cannot force somebody. If somebody is not interested, you cannot force. It's wrong. It's extremely wrong. So I'm all up and I completely support the Me Too campaign, and it's great that people are coming out and calling for help and I'm exposing. I don't really मुझे ऐसा लगता है कि किसी को expose करना on social media ये वो उसके अंदर फिर कितनी सच्चाई है उस बात में. बहुत सारे लोग हैं इस तरह की campaigns को to their advantage use कर लेते हैं. It's so easy. There are times, being a male artist, there were times when I was also harassed by a couple of female artists, in the past. I would not like to name, but, I've ignored it. Women cannot always be right. Achha, Jani, let me rephrase my question. Who do you think is bitchier, men or women? In the industry? Yes. Men! I think they're hell more bitchy. Why don't you share some personal experience with me just to clarify and just to, sort of make my concepts clearer? Something on a personal accord that you face. There's time and again, when you get to hear a lot of stories about, so and so was saying so and so. I usually don't believe it because until it just sits right in my face. लेकिन वो होता है कि उसने ये कहा और उसने वो कहा और आधे ज़्यादा वक्त तो बातें honestly true भी नहीं होती. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक insecurity actors में ज़्यादा prevail करती है comparatively कि ख़वातीन में उनकी मतलब हो तो होती है, लेकिन actors में जिस तरह prevail करती है, it's so unbelievable at times, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही different नौयत का आदमी हूँ. मुझे ऐसा लगता है मेरी बला से कोई कुछ भी कर रहा है, just know what I'm doing and what my life is. मुझे पता भी नहीं बाकी लोग क्या है, but इतना कभी-कभी मुझे हैरत होती है कि बाकियों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. They know कि मैं कहाँ था और मैं किसके साथ था और किसके साथ किस वक्त क्यों था और किस तरह था. तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें बड़ी प्रिवेल. बॉलीवुड में क्रॉस द बॉर्डर बहुत सारे हमारे लड़के बहुत बेकरार रहे और बहुत कोशिश करते रहे, तगो-दो की उन्होंने to somehow get a break in Bollywood. संजय लीला भंसाली, करण जौहर are household names in Pakistan. पहले तो मैं ये पूछूंगी कि क्या तुम्हारे अंदर भी वो एक क्रेज था to work across the border? Absolutely, बहुत क्रेज था. और मैं आपको बताऊं, मुझे 2-3 दफ़ा वहाँ से कास्टिंग एजेंट ने ऑडिशन की कॉल की. मैंने 3-4 ऑडिशंस बना के भेजे, वो तीनों बुरी तरह रिजेक्ट हो गए. Are you competitive, darling? I'm in competition with myself, to be really honest. Well, that's a very cliched line. Yes. Well, that's a very cliched line. लेकिन Begum, you know me so well. मुझे ऐसा होता है कि I take it as a job. ये काम खत्म किया, then I have a very glorious life, mashallah. You know how it is. तो काम खत्म करके I'm so engrossed in my life कि मुझे लगता है कि competition भी क्या है. You do your work, you do your job right. And then you move into your life then. Well, you made it quite clear earlier on in the interview that you don't discriminate between men and women. So if I were to ask you your man crush in Pakistan,
in the industry, who would it be? There are too many. I like that already. No. But honestly, I think Fawad Khan. I think he's great. And you must have seen the trailer of Maula Jat. It's super. I think I love the way they have crafted Maula Jat. It looks very intriguing and it's very up to date and so good. Something from Pakistan is, of that sort is coming out. I think it's great. Super. You've worked with some of the most beautiful girls in Pakistan. Your woman crush. Mehwish Hayat. Absolutely. Not just because she's my friend, but I believe that Mehwish is stunning. She has this, she's dusky, she's tall, and then, she's got great sense of humor. I think sense of humor in a woman adds so much for me. You're able to connect, laugh, ease out. So I think it's Mehwish. And if I'm directing a film, I would take Fawad and Mehwish. I think what a great new combination that would be. I completely agree with you, but I have to confess that मेरा दिल तुमने तोड़ दिया ये बात करके. क्यों? मैं सोच रही थी शायद तुम मेरा नाम लोगे. I can't crush you. You can't? No, of course you can't crush me, but you can have a crush on me. And I thought you had a crush on me. Aisha, Umar से भी तुम्हारी बहुत दोस्ती रही. In fact, I remember when you guys had that little accident coming back from Hyderabad. Going to Hyderabad. Was it going to Hyderabad? Yeah, we were going to What Hyderabad. happened? क्या हुआ गाड़ी में ऐसा कि तुम्हारी गाड़ी बेकाबू हो गई? खुदा का वास्ता क्या हुआ ऐसा जो मैंने बाद में अखबारों में बातें पढ़ी हैं, जो अखबार वाले लिख रहे हैं, जो ब्लॉगर कुछ भी सोच के लिख देते हैं. मतलब मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि हम एक मुल्क के दो कंसिडरेबली फेमस या एक बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग एक्टर्स हैं, उनके बारे में हम कुछ भी लिख देंगे कि इतने नशे में गाड़ी चल रही थी कि गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया और ये था और वो था और किस वजह से जा रहे थे. ऐसा कुछ भी नहीं था. ये सारी फजूल बात है. एक ब्रांड की लॉन्च पे जा रहे थे, उनका स्टोर की ओपनिंग थी और मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी ड्राइवर चला रहा था बिकॉज इट्स अ लॉन्गर राउट. मैं और आयशा बैक सीट पे थे और आई डोंट नो वेदर द ड्राइवर हैड उसने कोई नशा किया हुआ था क्या था. कंप्लीटली आई एम क्लूलेस अबाउट दैट. सामने एक ट्रक आ गया और मुझे ऐसा लगता है कि जो हाईवे पे ट्रक्स होते हैं उनकी बड़ी गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग होती है. वो एकदम से ट्रक एंड माई कार वॉज सैंडविच्ड इन 2 ट्रक्स एंड देन वी वर कम्प्लीटली. एक बहुत ही खौफनाक एक्सपीरियंस था बेगम. मैं आपको क्या बताऊँ, वो एक बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक वाइल्ड लाइफ चल रहा था. मैंने बड़ा उसको ब्रेक लगाया, चीज़ें थोड़ी नॉर्मल की अपनी ज़िंदगी में. मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था बिल्कुल जिस तरह दिमाग से आज़ाद नहीं हो जाते आप, आज़ाद ख्याल हो जाते हैं, मैं बिल्कुल वैसा हो गया था. मैंने फ़ौरन उस एक्सीडेंट के बाद से बहुत चीज़ों को ब्रेक लगाया, लाइफ को बड़ा ऑल्टर किया. मैं काफ़ी मजहबी हो गया, रिलीजियस हो गया कि बिल्कुल एक जैसे नई ज़िंदगी आपको मिली है. बिल्कुल इस तरह की चीज़ थी. आयशा का तो बहुत टफ डील थी. शी ब्रोक अ बोन इन दैट. मेरा तो सर फटा था. बट वी वर टुगेदर और दोस्त वही होते हैं जो साथ रहते हैं. और आई लव आयशा अ लॉट. She is very, very dear to me. Well, she's dear to all of us, but people can be vicious, and especially with their pen. कितना आसान है किसी के बारे में कुछ लिख देना, कुछ कह देना. असफर, मैं आपको बता रहा हूँ, कल को आप या आपका ड्राइवर भी कोई प्रोजेक्ट, कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हो, मुझे बताया, मैं सुनूंगा, पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे भूखे काम करने की. जो लिखने वाले इनको सिर्फ शोहरत चाहिए और शोहरत चाहने के लिए कुछ भी लिख देते हैं. एक मुझे बात बताएं, चले मैं अगर 10 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे बता सकता हूँ ना कि भाई मैंने ये काम किया तो आप मुझे फिल्म में कास्ट कर लें. मैं आपको इस तरह की एक्टिंग करके दे सकता हूँ. ये जो इनके पास किसने इनको अथॉरिटी दी है कि कोई भी सुबह उठ के कोई 20-25 साल का लड़का या लड़की एक खत लिख दे कि नो ओनली 2 stars फ्रॉम माई साइड एंड दिस फिल्म इज अ कॉपी ऑफ दैट फिल्म. हु हैज गिवन देम दिस अथॉरिटी? क्या आपके पास कोई, आर यू अ फिल्म स्टूडेंट? Do you have a degree in film history or do you have a degree in journalism? How can you write about people who are working day and night for a living, who have a family to back up? ठीक है, आपकी सोसाइटी में स्टैंडिंग है, आप कुछ भी लिख देंगे. जो ओल्डर लॉट था, स्लाइटली सीनियर, जो लोग काम की मेरिट में बिलीव करते थे, जो बिलीव करते थे दैट वी नीड टू प्रूव आवरसेल्व्स थ्रू आवर वर्क, उनमें और इस यंग लॉट में क्या फर्क? अच्छा बेगम, सबसे पहले तो बताओ, वी desperately need new stars. We desperately need new people to come in. We desperately need fresh blood coming in. So Ahad and Bilal Abbas and Feroz, I think these 3 are the future of television. And what about Muneeb? But darling, he got married. Even Muneeb also. तो मैं एक ऐसी एक generically ये 3 जो ज़्यादा फेमस है इनका नाम ले रहा हूँ. मुझे लगता है ये इन लोगों का मुस्तकबिल के ये हीरोज होंगे. लेकिन एक जो होता है ना, it shouldn't go to their head
ये मेरे साथ के भी जो लड़के थे उनके भी it went to their head to a lot of them. लेकिन आपको पता है कहते हैं ना जिस तरह एक वर्ड है फ्लूक, तुक्का लग जाना, ये तुक्का जरूर लगता है लेकिन आई थिंक सस्टेन आप उसको अगर आपकी कितनी अथॉरिटी अपनी क्राफ्ट पे, सस्टेन आप उसी तरह करते हैं. Actually, if you were to steal something from the following people, I'm going to take names and you have to answer कि अगर इनसे कुछ चुराना हो, and doesn't have to be necessarily material, what would it be? Mira. उनका phone. And why, darling? With password, because I'm sure there's a lot of things going on in that phone. Yeah. Reema. रीमा से तो मैं चुराऊंगा उनका ब्यूटी सीक्रेट, उनका डाइट regime, because she's glowing and stunning. She's awesome. Shan. I've heard that he's one of the richest people, one of the richest actors. I think शान से तो मैं उनका कोई signed check चुरा लूंगा कि जरा कुछ इधर भी आए. Saima. Film star Saima. उनकी acting histrionics, she's superb. I'm going to steal that. I'll steal Sayyid Noor also. I want him to make Chudiyan 2 with me. I love Chudiyan. What a great story. What great music. लड़कों को क्या पैगाम देना चाहोगे? How does one make it big? How does one make it in the industry? I think there are a lot of casting agencies now, Citrus Talent and Ajmal Murad Talent and Khabar Riaz Talent. There's so many talent agencies. सब इंटरनेट पे वहाँ से आप जा सकते हैं. लेकिन पहली चीज़ जो मैं सबको कहूँगा, प्लीज़ वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी बिफोर यू एंटर इंडस्ट्री. कहीं नहीं लिखा हुआ कि 16-17 साल की उम्र में एंटर करें. एजुकेशन पूरी करें, डिग्री पूरी लें ताकि आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म हुई भी हो, आपका डिक्शन सही हो, उर्दू बहुत अच्छी बोलते हो, साफ तलफ़ुज़ हो. लाहौर से पंजाब से इतने लोगों को मैं जानता हूँ, उनका लहजे में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. अपना लहजा सही करें ऑफ कोर्स, एंड देन स्टार्ट मेकिंग TikTok. Yeah. Let's talk, Johnny. Yeah. So I have put together some rapid fire questions, and of course I'm going to expect you to be answering very, very honestly. So I'm going to take 5 names, boys. I want you to rate them in order of your preference. Okay, so there's Humayun Saeed, there's Hamza Ali Abbasi, there's Fawad Khan, there's Fahad Mustafa, and there's Imran Abbas. Nice. What a nice combo. But I have such a bad memory कि I don't know ये सारे नाम हैं, but I think Humayun is number 1, of course. Number 2 is Fawad. I think he's awesome in every way. Number 3 is Fahad Mustafa. Then Hamza, and then Imran. Why would Imran be the least on your or the because last? They're comparatively newer people. I think newer people should be up there. Okay, let's talk about directors then. So there's Nabil Qureshi, there's Nadeem Beg, there's Asim Raza, there's Azfar Rehman, and there's Saqib Malik. How can you not mention Fahim Barni in this list? Well, Johnny, I'm talking. Please, why? No. You have to add Fahim Barni in this list. I'm talking about film directors. Oh, okay. But he's also a film director. He made a film. He's going to make his next film. I'm sure he will. I think Nadeem Beg A. Then Azfar Rehman, Saqib Malik, and Asim Raza, and then Nabil Qureshi. Ladies, Mahira Khan, Maya Ali, Mavra, Suhai, and Mehwish Hayat. Mehwish, Suhai, Mahira, and then the rest. Okay, can we talk about politics a little bit? Sure. I mean, इस मुल्क के अंदर 3 किस्म के लोग रहते हैं. ठीक है. यूथिया, पटवारी और जियाला. Which of these three categories do you relate to? एक और भी है, वो मैं बोल नहीं सकता. बोल दो. नहीं. बोलो ना जानी. You can't tease me like that. You said what? I said Yuthia, I said Patwari, I said Jiala, and what's the 4th one you want to add? Burger. Good. आप किस कैटेगरी में शुमार करेंगे खुद को? I'm so burger. Okay. So you would, did you vote in the last elections? I did. You did? हाँ. Good. That is a socially... I voted for तब्दीली. और आपको लगता है तब्दीली आ गई है? I think आ जाएगी with time. अभी तक so far तो आ रही है, I think it's still in taking baby steps towards it. I'm going to ask you if the following people were to change one thing about their lives, what would you like it to be? Mavra. I think Mavra is doing Angan. I'm really happy. और मुझे ऐसा लग रहा था that Mavra should be doing some hard-hitting acting roles where she's crying and shouting and running and completely de-glam. उसके साथ इतना glamour attach है. मैं चाहता हूँ वो de-glam होके कुछ acting करे. Fahad Mustafa. I think what Fahad Mustafa, I think he should leave Nadeem Beg's camp. It's my camp. Why is he here? I lost my Jawani's chance to Fahad. Why is he in this camp? Fahad, please leave
Nadeem bhai's camp. Why are you in this camp? Humayun Saeed. I think Humayun Saeed should change his hairstyle. I want to change Humayun Saeed's hairstyle. I think he should try some new hairstyle. Would you like him to grow his hair longer? No. I think Humayun should keep an army crew cut, really short hair. And I think Humayun bhai should go skinny. He should be skinny with really short hair. And I would want to see him in that. Shahriyar Munawwar Siddiqui. I think Shahriyar should do drama. उसको थोड़ा ड्रामा करना चाहिए, ड्रामा टेलीविजन, जहाँ से एक तो फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी, दूसरा एक्टिंग और अच्छी उसको आएगी. माहिरा खान. माहिरा को मेरे साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहिए. Mahira. Well, I believe that she's doing her next project with Nadeem Bey. Really? Yes. It hasn't been announced. What is Nadeem's number? I have to call. I think. Well, I'll share that with you. Let's finish our rapid fire round. Mehwish Hayat. मुझे महविश को पिछले मैं 5 साल से अगर देखता हूँ ना, महविश इज स्ट्रगलिंग बिटवीन 3 डायरेक्टर्स. उसको इन 3 डायरेक्टर्स से बाहर कब काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक विजन में आपको एक नजरिए से आपको देख रहे हैं, ठीक है. और मुझे लगता है कि कोई नया डायरेक्टर जब होता है वो आपको एक नए तरीके से रीलॉन्च करता है, उसका एक नया, जिस तरह फरहान अख्तर केम, उसे सैफ को, आमिर को, अक्षय खन्ना, यू नो, ही गिव अ न्यू लुक थ्रू दिल चाहता है. आई थिंक महविश को एक नए डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए. What next for Azfar Rehman? Well, I've done a web series and I became a father. Mashallah. Many congrats. And I am planning to do my first proper hero feature film. So, and little dramas are coming in and fashion campaigns are coming in. So I'm just like looking towards that. Acha, last but not the least, any fears, Azfar? Begum, just one fear in life. Just one fear. Growing old? No, losing your loved ones. Growing old तो होगा. ये तो होगा, दाढ़ी वाइट होगी, उसके लिए हेयर कलर है, बाल गिरेंगे, उसके लिए वो दूसरे सिस्टम है. बट वो तो ग्रोइंग ओल्ड तो इज पार्ट ऑफ द गेम, वो तो कुछ चेंज हो नहीं सकता. वी ऑल हैव टू ग्रो ओल्ड. लेकिन लूजिंग योर लव्ड वन इज लाइक द ओनली फेयर आई हैव, कि जिनसे प्यार है, जिनसे इमोशनली कनेक्शन है, इमोशनली कनेक्टेड हूँ, या जिन पे इमोशनली बैंक करता हूँ, या जिनको बचपन से देखा हुआ है, जैसे वालिदैन होते हैं, या जो वो दोस्त हैं जो हमेशा से साथ रहे हैं, उनको बस खोने का डर है. सिर्फ एक ही डर है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई. मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें खोकर पा लिया अज़फर. आज मैं बहुत खुश हूँ. I got a little something for you. No way. It's just a little token of my love. Thank you so much. And thank you so much.